Hello everyone, I hope कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे. So friends, in the last class, in the last two lectures, we discussed two very important topics. Like one was Heisenberg uncertainty principle, and the second was de Broglie's wavelength. And after the discussion of Heisenberg uncertainty principle, हमें पता लगा कि भैया बोहर्स मॉडल जो है वो फैल जाएगा, isn't it? कि Bohr's model is not able to explain certain things, and according to Bohr's model, electron is a particle, and as per the Bohr's model, it is very much possible to find the momentum as well as the exact position of the electron. But later on, Heisenberg ने उसको disprove किया कि नहीं, at simultaneously we will not be able to identify the position as well as momentum. इसका मतलब बोहर्स मॉडल के हिसाब से इलेक्ट्रॉन वाज ट्रैवलिंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, जो हम लोगों ने पढ़ा था. All those concepts are now disapproved and failed. अब यहां से जन्म होता है एक नए मॉडल का, दैट इज क्वांटम मॉडल ऑफ एटम. नाउ बच्चों के दिमाग में देयर इज एन इशू कि सर अर्लियर वी स्टडीड डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, देन केम द रदरफोर्ड मॉडल, isn't it? उसके बाद फिर सर बोहर मॉडल आया, एंड ईच एंड एवरी मॉडल वी आर बेसिकली मेकिंग इट टू फेल. नो, इट इज नॉट लाइक दैट. Slowly the science जो है धीरे एडवांस होते जा रहा है, and some new experimental results were not able to explain by the previous models. So obviously हमने उन मॉडल्स को फेल कर दिया, and at present अभी जो मॉडल चल रहा है that is quantum model. कल को if अगर कुछ और एक्सपेरिमेंट्स ऐसे आते हैं which are not even explained by the quantum model, then also हो सकता है कि मॉडल ये फेल हो जाए. But the best part of quantum model is कि it was not developed by a single scientist. इस बार ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट ने सबने मिलकर काम किया और उन्होंने मिलकर इस मॉडल को दे दिया. अब तक होता क्या था, सपोज कि रदरफोर्ड ने एक मॉडल दिया, तो जो रदरफोर्ड के चेले होंगे, जो उसके अंडर स्टूडेंट्स काम कर रहे होंगे, या द अदर साइंटिस्ट, दे विल फील जेलस ऑफ रदरफोर्ड, इजंट इट, एंड दे विल ट्राई टू मेक हिज नेम डाउन. और ऐसा करने के लिए दे विल ट्राई देयर हार्ड टू डिसअप्रूव द फाइंडिंग्स ऑफ रदरफोर्ड, एंड इस कारण से मॉडल आगे चलता गया. बट इन द क्वांटम मॉडल, ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट केम टुगेदर एंड दे प्रपोज दिस मॉडल. Okay, so we will be starting with the quantum model, and in today's lecture we will be discussing most of the theoretical portions, and I will try to include the questions relevant for this topic in the next lecture. Okay, तो शुरू करते हैं दोस्तों. Let us talk about quantum model. So first of all you need to understand कि before this model, atoms के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, all the electrons were considered only as a particle, only as a particle. But after the de Broglie's concept that the microscopic electrons can behave as a particle as well as wave, that is the duality of the particle wave matter का concept हम लोगों ने discuss भी किया था, वहां से आया था. तो in the quantum model you need to understand कि it is based on the fact that the smaller particles like electrons, protons, neutrons, they are having the particle nature as well as the wave nature also. और कहीं ना कहीं this model is more inclined towards the wave nature of that electron, the wave nature of the particle. According to the NCERT, they have simply written an equation like this: H psi equal to E psi, एंड एच के ऊपर उन्होंने कैप डाल दिया इस तरीके से, दिस इज एच कैप साई इक्वल टू ई साई, एंड दिस इक्वेशन इज कॉल्ड एज श्रोडिंगर वेव इक्वेशन. तो हमारे पास श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आ गई है, और दिस इज द जननी. जननी मीन्स यहां से क्वांटम मॉडल का बर्थ होता है फ्रॉम दिस पार्टिकुलर इक्वेशन. दिस इक्वेशन लुक्स वेरी सिंपल. सर व्हाट इज एच साई इक्वल टू ई साई? मैनी स्टूडेंट्स वो थोड़ा ज्यादा बुद्धि लगा देते हैं और साई साई काट देते हैं, बोलते हैं एच कैप इक्वल टू ई. इट इज नॉट लाइक दैट. Basically I will try to explain that what is h cap, what is psi, what is e, what is again psi. But again trust me on this, ये इक्वेशन कैसे आ रही है, कहाँ से आ रही है, इसका पूरा फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, इसका मतलब क्या है, that will be taught to you in your BTech first year. So in the BTech first year, there is a complete coursework like physics, and in the physics, quantum physics is taught to you guys. तो वहां पे इसका पूरा डेरिवेशन, पार्टिकल इन अ बॉक्स सबको सिखाया जाएगा. अपने को तो भैया क्वेश्चन बनाना है, अपने को बाबा नहीं बनना है. तो वी हैव टू ओनली सॉल्व द क्वेश्चंस इन द एग्जाम that are going to come from this relevant part. So we will study this topic accordingly. But मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा कि what is this H cap. Okay, जितना आपको जानना है थोड़ा थोड़ा. Okay, so H cap is basically called as Hamiltonian operator. So this is a
Hamiltonian operator. Now the next question arises, sir, what do you mean by Hamiltonian operator? इसको अभी हम लोग इतना मतलब फील नहीं कर पाएंगे यार. इट इज अ मैथमेटिकल टूल. मैं थोड़ा सा फिर से एक्सप्लेन करूंगा आप लोगों को. बेसिकली एच कैप इज ऑपरेटर. ठीक है, ये कौन सा ऑपरेटर है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एच कैप? इट इज माइनस एच स्क्वायर 8 पाई स्क्वायर एम डेल स्क्वायर प्लस यू. ठीक है, दिस इज एच कैप, दिस इज अ ऑपरेटर. ये हमारे पास एच कैप की वैल्यू ऐसी कुछ होती है. अब फिर से दिमाग में क्वेश्चन आते हैं, सर व्हाट इज माइनस एच स्क्वायर 8 पाई स्क्वायर एम? सर ये आपने इन्वर्टेड ट्राइंगल के आसपास स्क्वायर लगा दिया और आपने यू लिख दिया. व्हाट डज दिस सिग्निफाई? देखो यार, अगेन आई एम टेलिंग टू यू गाइस कि एट दिस level, at the level of class 11th or 12th, it is very much difficult for me also and for a student also कि ये हो क्या रहा है. But that is the good part, that understanding of this equation to that extent is not required till the level of JEE advanced. तो हमें इतना सोचना नहीं, but मैं फिर भी थोड़ा सा कोशिश करूंगा ताकि a little bit of satisfaction will be there in your mind. I will try for that part. Okay. अब देखो इसमें क्या क्या चीजें होती हैं. So first of all, what is operator? You need to understand what is operator. Operator is a mathematical tool. Like plus is operator. Suppose if you are writing two numbers like 5 and 3 and you are putting this plus operator in between, what does this plus operator do? It simply adds these two numbers, so the resultant is 8. So this plus is a simple example of operator. Plus, minus, multiplication, division, differentiation, integration. Like what is this? This is operator, right? मैं लिखता हूं यहाँ पे x dx. So this operator is basically used to symbolize कि हाँ हमें यहाँ पर x का इंटीग्रेशन करना है, isn't it? So operator means a mathematical tool which will be applied for a particular values और उनसे तो कुछ करेगा. ठीक है, तो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर जो है उसकी ये वैल्यू. और हमने क्या लिखा है देखिए सीधी इक्वेशन. इट इज एच कैप साई. सो दिस हैमिल्टोनियन ऑपरेटर इज अप्लाइड ऑन दिस साई. Now what is psi? I think psi के बारे में बताया था मैंने आप लोगों को in the lecture of Heisenberg uncertainty principle also कि psi is a matter wave. उस matter wave का क्या amplitude होने वाला है that is represented by this psi. ठीक है, अच्छा. तो सर इतना पता लग गया कि h cap मतलब आप वो बोल रहे हो कि it is a Hamiltonian operator. क्या सर for us is it mandatory to remember this formula? No. Till the level of JEE Advanced, there is no requirement for you guys to remember or to recall this formula. It is not required. As a teacher, I should be knowing this, but for you guys, you are exempted from remembering this formula. Now, sir, what is del square? Okay, the thing is, del square is basically representing the double differentiation. It is representing the double differentiation. ठीक है सर, ये डबल डिफरेंशिएशन मतलब क्या होगा? डबल डिफरेंशिएशन इन 3 डायमेंशन पार्शियल. लाइक इट इज डेल, ठीक है, डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर डेल जेड स्क्वायर. ये क्या किया सर आप लोगों ने? मैं आपके सामने दोबारा से क्वेश्चन लिखता हूँ एक बार फिर से. तो हमारी क्वेश्चन थी एच कैप साई इक्वल टू ई साई. हम यहाँ पे एच कैप की वैल्यू डाल देते हैं. एच कैप को हम लोगों को we have to multiply this operator with this side. तो क्या मिलेगा बताओ, क्या मिलेगा? See, it will be minus h square 8 pi square m and then it will be psi. मतलब हम अपने वेव का 3 डायमेंशन में डबल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं. तो इट इज बेसिकली अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द सेकंड ऑर्डर इस तरीके से. तो ये हमारे पास यहां तक हुआ. ठीक है, प्लस इट विल बी u psi इक्वल टू e psi. ये हमारे पास पूरी इक्वेशन बनकर आती है. दिस इज द कंप्लीट श्रोडिंगर इक्वेशन रिटन इन इट्स ट्रू फॉर्म. ठीक है, बट ऑफ कोर्स ये आपको याद नहीं करनी है दोस्तों. वी हैव टू ओनली रिमेंबर इफ समवन आस्क्स दैट व्हाट इज श्रोडिंगर इक्वेशन, हम फिर बोलेंगे भैया h psi इक्वल टू e psi होता है. Wherever you guys are sitting, just repeat after me that Schrodinger wave equation is simply h psi is equal to e psi. H is a Hamiltonian operator. What does operator means? Operator means a mathematical tool which will be applied on certain numbers, certain variables, और उनके बीच में कुछ relation establish करेगा. Like plus, minus, multiplication, these are simplest operators. Okay, here this is Hamiltonian operator. Now
What is psi? I already told you that psi is it is called as wave function, and basically this is representing the amplitude of matter wave. Okay, what is this E represents? This E represents total energy. Total energy. And here also, this part represents the kinetic energy. This part represents the potential energy. So kinetic energy of the wave function psi, potential energy of the wave function psi equal to total energy of the wave function psi. Again, so conservation of energy, some sort of thing is done here. Okay. Now, sir, हमें कुछ खास समझ नहीं आया. We are only able to remember this part कि h psi equal to E psi कुछ तो होता है, and h you are saying many times Hamiltonian operator, Hamiltonian operator, Hamiltonian operator. So yes, we are somehow it is now set in our mind that h cap is called as Hamiltonian operator. That is only required. That is only required. Now, the next thing that comes in our mind is regarding the quantum numbers. Sir, in the quantum model in our school, in our coaching, it was taught that quantum numbers are coming from the quantum equation. Yes, 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 correct. So this is a quantum equation. This is a partial differential equation of second order. Obviously, if you're going to solve it, you will be getting some solutions as well as some integral constants also, isn't it? Whenever a partial differential equation is solved, भैया कभी भी कोई भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन अगर सॉल्व होती है, हम उसको इंटीग्रेट करते हैं तो कुछ कांस्टेंट्स आते हैं कि नहीं, ये बता दो मुझे. सारे के सारे बता दो, कुछ कांस्टेंट्स आते हैं कि नहीं आते हैं. सो व्हेन वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस इक्वेशन, when we are going to solve this equation, there will be some integral constants, and basically those constants are called as quantum numbers. From those constants, we will select few constants which are very much relevant, and those constants are called as quantum numbers. Okay, तो दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूँ, सुनना ध्यान से जो बातें मैंने बताई आप लोगों को दोस्तों, कि we are having quantum equation. This is Schrodinger equation, is also called as quantum equation, and this is basically a partial differential equation of second order. Okay, and when we are going to solve it, we are going to integrate it, we are going to get some integral constants, and those integral constants are called as quantum numbers, quantum numbers, quantum numbers. अच्छा, क्या आप जानते हैं कि हमारे पास श्रोडिंगर इक्वेशन से कौन कौन से क्वांटम नंबर्स आते हैं? हाँ सर, हमें तो टीचर ने पढ़ाया सर. द फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. हम इन सब क्वांटम नंबर्स को एक करके पढ़ेंगे. दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. सो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. द सेकंड वन इज कॉल्ड एज azimuthal quantum number, or it is also called as angular momentum quantum number. And guys, the third one is called as magnetic quantum number. So we are having three quantum numbers: principal quantum number, azimuthal quantum number, magnetic quantum number. I know that you guys are thinking कि सर हमें तो चार पढ़ाए गए हैं, हमें तो चार पढ़ाए गए हैं. Yes, you are correct. चौथा भी होता है, but there is a difference. These first three quantum numbers are coming from this Schrodinger equation. Okay, so we are having this Schrodinger equation. On solving this Schrodinger equation, we are getting the first three quantum numbers from this equation only. What about the fourth quantum number, that is spin quantum number? That quantum number was introduced from our own side, from the group of scientists, to satisfy certain experimental facts. Okay, so you need to remember this point, that only three quantum numbers are coming from the Schrodinger wave equation. But the fourth quantum number that you guys are waiting for, that is spin quantum number. तो दोस्तों ये हमने खुद से डाला था ताकि हम कुछ एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स को सेटिस्फाई कर पाए. ओके, नाउ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज डिनोटेड बाय द सिंबल n. Azimuthal or magnetic, or sorry, angular momentum quantum number is denoted by the symbol n, and the magnetic quantum number, the symbol is ml. Sometimes m is also used, but it is better to use m and in the
subscript, you can write small l also. That is a much better denotion. Sometimes only m will be given. Okay. And for this spin quantum number, it is ms. Okay. So we are having in total 4 quantum numbers. Come on, everyone. How many quantum numbers we are having? पहला वाला कौन सा, सारे बोल दो, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. दूसरा कौन सा, फिर से सारे बोल दो, एजीमुथल या फिर एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर. तीसरा कौन सा मेरे भाई, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर. एंड द फोर्थ वन इज spin quantum number. So guys, we are having in total 4 quantum numbers. 3 of them are coming from the quantum equation, whereas the fourth one was introduced by the group of scientists only to satisfy certain experimental facts. यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी मेरे भाई तो मुझे बताओ. I hope everything is clear till this point. Okay. Now we are going to learn about all these quantum numbers one by one. कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या देगा, एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या देगा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या देगा, स्पिन क्वांटम नंबर देगा, क्या देगा, what actual values they are going to give and what is their significance. So let us start with the first part, that is principal quantum number. आओ चालू करते हैं. Let us start. Okay guys, so in the principal quantum number, the symbol is n. Okay. First of all, we need to understand that the value of n will start from 1. After 1, it will be 2. After 2, it will be 3. After 3, it will be 4, and so on. It cannot be in fraction. It cannot be 0. It cannot be in negative. So मैं उन बातों को यहाँ लिख देता हूँ कि cannot be fraction, cannot be 0, it cannot be negative. I hope this is clear to all of you. Okay. So n equal to 1, 2, 3, 4, and n cannot be fraction, it cannot be 0, it cannot be negative. And what does this n gives us? So basically this is going to give us shell. क्या देता है अपने को, ये शेल देता है कि हमारा इलेक्ट्रॉन जो है वो कौन से शेल में रहने वाला है. मैं थोड़ा सा चीजों को इंटरलिंक कर रहा हूं. These quantum numbers are basically going to give us the address of the electron. The electron का address क्या है? Suppose I am residing at present in Bangalore. Okay. तो मेरा एड्रेस क्या है, मैं आपको एकदम आराम से बताता हूँ कि कैसे सोचना है चीजों को, हाउ टू इंटरलिंक द थिंग्स. तो सपोज माय एड्रेस इज कि आई एम लिविंग इन विच सिटी. मैं इसको एक काम करके लिखता हूँ. सो आई एम रिसाइडिंग इन अ सिटी दैट इज बेंगलुरु, नम्मा बेंगलुरु. बेंगलुरु में रह रहा हूँ. उसके बाद मेरा लोकेलिटी कौन सा है दोस्तों. तो सपोज अगर मुझे अपना लोकेलिटी बताना है तो दैट इज आई एम रिसाइडिंग इन अ एरिया which is called as Whitefield. तो मैं यहाँ पे Whitefield लोकेलिटी में रह रहा हूँ. आफ्टर दैट इट कम्स दी कि मेरा हाउस नंबर क्या है या मैं कहाँ पर हूँ. तो सपोज माय हाउस नंबर इज 714. दिस इज द हाउस नंबर. और इस हाउस नंबर में आपको मैं मिल जाऊंगा, है कि नहीं. ये देखिए, तो मैं आपको इस घर के अंदर मिल जाऊंगा. सो सिमिलरली many electrons are residing in that particular atom. Okay. And we need an address for the electrons. What is the address of electrons, how we can locate them, and to locate them, to depict their address, we are using quantum numbers. So principal quantum number is basically like giving the city of that particular electron. Then azimuthal quantum number is going to give the locality of that particular electron. The magnetic quantum number is going to give us the particular that where the house number is. Here it is called as orbitals. And in that particular orbital, we are going to find that electron. So that is the simple meaning of quantum numbers. So quantum numbers are basically going to give us the address of the electrons, address of the electrons, address of the electrons. Okay. So principal quantum number will give us shell. Shell is like city. Okay. Let me write down that words also. The principal quantum number will give us shell. In our day-to-day language, shell can be considered as a city. That is the city of the electron. Then inside the city, there are many localities. Similarly, inside the shells, there are many subshells. There are many subshells. So yes, this locality is like subshell. So suppose if someone asks you that azimuthal quantum number or the angular momentum quantum number is going to give us what
data, what value? So sir, it is going to give us the subshell of that particular electron. तो subshell यहाँ से आ जाएगा अपने पास. Then magnetic quantum number is going to give us orbital. Yes, it is not orbit, it is orbital. In the next lecture, we might also discuss the difference between the orbit and orbital. Surely we are going to discuss that also. So subshell, उसके बाद हमें मिल जाएगा ऑर्बिटल, और उस ऑर्बिटल के अंदर कौन रहेगा? इलेक्ट्रॉन रहने वाला है, इलेक्ट्रॉन. आपको ऐसा फील करना है, ऐसा इमेजिन करना है कि ऑर्बिटल इज लाइक अ रूम, एक सिंगल रूम, ऐसा मान लेना. ठीक है, तो ऑर्बिटल एक रूम है, उस रूम के अंदर दो बेड लगे हुए हैं, दो बेड लगे हुए हैं, दो बेड दो बेड दो बेड लगे हैं. ठीक है, और एक बेड पे एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, दूसरे बेड पे दूसरा इलेक्ट्रॉन रहेगा. मैं उसमें आऊंगा अभी आराम से. ठीक है, तो ऑर्बिटल्स के अंदर याद रखना है, रिमेंबर दिस पॉइंट, दैट इन ईच ऑर्बिटल वी कैन एट मैक्सिमम प्लेस टू इलेक्ट्रॉन्स ओनली, टू इलेक्ट्रॉन्स. कुछ बच्चे अभी ऐसे हो जाएंगे, सर हमने तो पढ़ा था कि पी वाले में 6 इलेक्ट्रॉन जाते हैं. माय डियर फ्रेंड्स, जो आगे का सोच रहे हैं उनके लिए है सिर्फ ये. In p subshell we are having 3 orbitals, px, py, pz. All of them contains two electrons at max. So each orbital, a single orbital, can contain only at max 2 electrons. So you should be able to distinguish clearly between the subshell as well as the orbitals. Okay, so now let us come back to this part. So principal quantum number is going to give us the shell. In the smaller classes, like in class 9th, in class 10th, you might have studied कि शेल को तो सर हम लोग ऐसे पढ़ते थे, के शेल है, एल शेल है, एम शेल है, एन शेल है, एंड सो ऑन. यस, you can remember that part also. But in senior classes, in class 11th and class 12th, we write shell in the form of numbers. K shell means first shell, n की वैल्यू 1 हो जाएगी यहाँ पर, l के लिए 2 हो जाएगी, m के लिए 3 हो जाएगी, n के लिए 4 हो जाएगी, and so on. ठीक है, okay. Now principal quantum number से which data we can interpret? What are the data that we can interpret? First, it gives the value of the shell. Second, we can also interpret the energy. Like suppose comparison of energy can be done. For example, suppose एक atom में या कोई इलेक्ट्रॉन अगर है, वो second shell में है, and some electron is in the fourth shell. तो second shell वाला इलेक्ट्रॉन जो होगा, that will be closer to the nucleus, its energy will be less. Whereas the electron which is in the fourth shell, it is far away from the nucleus, its energy will be more. So yes, we can get the data of the idea of energy also from this principal quantum number. What other data it can give? It can give the idea about the size. Suppose in one atom, the last electron is only in the third shell. Okay, in one atom, the last electron is in the third shell. Whereas in the another atom, the last electron is in the fifth shell. So fifth shell, obviously, it is going to be much far from the nucleus. So the size of that atom will also be large, isn't it? एक न्यूक्लियस के आसपास मान लो थर्ड शेल में आखिरी इलेक्ट्रॉन, तो पहला शेल बहुत नजदीक होता है, न्यूक्लियस के बहुत नजदीक होगा. सेकंड शेल थोड़ा दूर हो जाएगा, देखो. थर्ड शेल थोड़ा और दूर हो जाएगा, देखो वीडियो, देखो वीडियो वीडियो वीडियो. थर्ड शेल और दूर हो जाएगा, है ना. तो अगर किसी एक एटम के अंदर आखिरी इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं, हमारे पास कौन सी शेल पड़ा हुआ है, सपोज द लास्ट इलेक्ट्रॉन इज इन द थर्ड शेल, और एक में मान लो वो फिफ्थ शेल में, तो कहाँ पर उसका जो साइज होगा बड़ा होगा? क्या आप लोग ऐसा इंटरप्रेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? ऑब्वियसली बात. तो साइज का आइडिया मिल जाएगा, एनर्जी का आइडिया मिल जाएगा. उसके बाद उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, इसका भी आइडिया मिल जाएगा. द इलेक्ट्रॉन विच इज क्लोजर टू द न्यूक्लियस, जो उसका शेल बहुत कम होगा, जिसका शेल नजदीक होगा न्यूक्लियस के, it will be feeling more force of attraction because of the nucleus. और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर पता लग जाएगा, तो क्या मुझे स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का भी तो पता लग जाएगा कि इलेक्ट्रॉन कितना स्टेबल है किस शेल में. सोचो इस बारे में. मान लो इलेक्ट्रॉन इज इन द फर्स्ट शेल, इलेक्ट्रॉन इज द थर्ड शेल. So in the first shell, it will be feeling much more force of attraction. So it will be very difficult for us to remove that particular electron, so its stability will be high. Whereas the electron which is in the third shell or in the fourth shell, it is far from the nucleus. So force of attraction is less. So we can easily remove that electron as compared to the electron in the first shell, isn't it? So yes, we can get the idea of stability also. So these are the various parameters regarding which the principal quantum number gives us the idea. Now let us talk about the second, that is angular momentum quantum number.
or it is called as azimuthal quantum. So angular momentum quantum number, or it is called as azimuthal quantum number. It is denoted by the symbol L. Now the best part is the value of L starts from 0. After that it will be 1, 2, 3 till n minus 1. Till n minus 1. So suppose, just an example, suppose if the value of n is 4, then what are the permissible values of L? Sir, you told just now that value of L starts from 0. It means initially it will be 0 and it goes to n minus 1. So 0, 1, 2, 3. Is it clear to all of you? So in this manner, we find out the values of L. Moreover, in case of principal quantum number also, we gave some alphabets K, L, M, N to that particular quantum numbers, principal quantum numbers. In the similar fashion, here also, we are going to give some alphabets to these numbers, like 0 is called as S, 1 is called as P, 2 is called as D, 3 is called as F, and so on. S, P, D, F, G, H. It goes on like this only. Okay. So 0, if the angular momentum quantum number is 0, it means we are talking about the S subshell. For 1, it is P subshell. For 2, it is D subshell. For 3, it is F subshell. Now, azimuthal quantum number gives what values to us? Sir, it gives us the subshell. It gives us the values of subshell. Moreover, it also gives the shape of orbitals. For different orbitals, we will study the shape in the next lecture. So it also gives the shape of the orbitals. Like you know that S is spherical in nature, P is a dumbbell shape, D is a double dumbbell shape, and so on. So it gives the shape of the orbitals. Plus, as the name suggests, it also tells us about the angular momentum of the orbitals. Okay. Angular momentum of orbitals. I want you guys to refer your notes which has been taught to you and comment down the formula of angular momentum of orbitals. It is somewhat under root, and next part you need to write. Okay. So angular momentum of orbitals, that is given by the this quantum number. Okay. So this is the important theme regarding the angular momentum quantum number. I want you guys to revise the things from initially. And in the next lecture, we are going to cover next two quantum numbers, and we will obviously be doing some of the questions of the JEE mains, which has been asked from this particular topic. And then we will be moving towards the electronic configuration part, where we will be studying some exceptions also. We might be knowing chromium and copper, but apart from chromium and copper, there are many exceptions. And plus, we will be discussing like how to write the electronic configuration of cations and ions, what is the difference in that, and moreover, paramagnetic, magnetic nature. In addition to that, we will also discuss the shapes of the orbitals, just like I told you now. And then we will start with the periodic table and the chemical bonding, because that is the important part, which will be building the basics for you guys for the next chapters to come. Okay. So till then, take care. Bye-bye. Have fun.